Assalamu alaikum and good evening to all of you viewers. Today is the first session of our channel theoreticalnursing.com presented by me Ayaz Khan. Today is the first session and this session we will discuss about what is nursing profession and what is the difference between profession versus occupation. During this session I will use both Urdu and English language so that most of the student can understand the basic concept of nursing and understand at the same level. आज के टाइप पे हम सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग क्या है, प्रोफेशन क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिक नर्सिंग की डिफिनीशन की बुनियाद कब रखी गई और प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के डिफरेंस के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशन की कौन सी सेलिएंट फीचर है जिस पे हम अब अपने आप को कह सकते हैं कि हम नर्सिंग प्रोफेशनल है या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम ये उस वो सेलिएंट फीचर हम जान सके। सो टुडे वी आल्सो डिस्कस few of that. Now, in the first slide, we will discuss about profession. Profession क्या है? Profession is a field of study that requires special knowledge, skills and preparation. एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज, स्किल्स एंड प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है सर. There's a kind of special knowledge that is different from the other profession, and I will explain this by giving the following three examples. Like, nursing is a profession that has its own body of knowledge, special nursing skills and training preparation that is different from the teaching profession and the medicine profession. The teaching require the special education, training and preparation different from the nursing, like it required the B.Ed and M.Ed specialized training which is essential for the teachers to get trained in that specialized training and that specialized skill, how to conduct teaching session, how to control the class environment and the different teaching strategies. Whereas the medicine has its own body of knowledge, the required skills and the training profession that differentiated from the other profession. तो लास्ट में हम प्रोफेशन को फाइनली अगर हम डिफाइन करें तो एक ऐसा प्रोफेशन है, फील्ड ऑफ स्टडी है जिसकी अपनी स्पेशलाइज नॉलेज होती है जिसको हम डिसिप्लिन नॉलेज कहते हैं, या स्पेशलाइज स्किल्स होती है जो कि वेरी करती है या डिफर करती है उसी प्रोफेशन को फ्रॉम अदर प्रोफेशन. नाउ we'll discuss about what is discipline. Discipline is defined as a training or molding of the mind and characters to bring about desired behavior. बसवंतापा ने इसको इस तरह डिफाइन किया है कि डिसिप्लिन हम उस प्रोफेशन को कहते हैं जिसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है और एट द एंड उस ट्रेनिंग का एम होता है ताकि एंड पे जो प्रोफेशनल प्रोड्यूस हो उनके डिजायर बिहेवियर जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो अचीव हो. And especially when I go further in this session, so you will understand that what is mean by the desired behavior and the requirement from the nursing professional that they must have. Like discipline refer to working in accordance with certain recognized rules, regulations, and customs.
whether they are written or implicit. Maybe written explicit or implicit, that is already understood. It means to create a spirit of tolerance and a desire to make adjustment to the environment. Discipline also create a favorable attitude that is essential to effective work to achieve the desired outcome. डिसिप्लिन को अगर मजीद हम एलाबोरेट करें तो इसका मेन एम जो होता है वो जो डिजायर बिहेवियर जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि द एंड ऑफ दिस program you must have the following desired behavior, then you will be able to work uh, effectively and to achieve the desired outcome. Like इसको मैं फर्दर अगर एक्सप्लेन करूँ, अगर हम एक नर्सिंग डिसिप्लिन की बात करें तो प्रोफेशनली अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारी नर्सिंग डिसिप्लिन प्रोफेशन की अपनी एक नर्सिंग नॉलेज है, इसको स्पेशली नर्सिंग थ्योरिस्ट ने, नर्सिंग प्रोफेशनल ने डिजाइन किया। फिर नर्सिंग प्रोफेशन की अपने स्पेशलाइज स्किल है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द अदर प्रोफेशन लाइक टीचिंग एंड द मेडिसिन प्रोफेशन। तो ये तो क्लियर हो गया प्रोफेशन के बारे में। अब डिसिप्लिन बेसिकली एज दैट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन विच the nursing professional are expected to have some certain behaviors so that they can work effectively to achieve the desired effect. Like they must be flexible, they must be dutiful, they must be respectful, they must be competent at a certain level to work safely with the patient and the client they care for. So it will be further clarified as soon as I progress with the session. Now, what is vocation and occupation? Vocation is basically a job that you do because you feel it. It is your purpose in life, and for which you have special skills like mason, mechanics, fridge technicians. They have that specialized skills that is their purpose of life, their purpose of livelihood, and that specialize that guy and that person from the other person. Whereas when we define the occupation, so occupation is just like a hobby and a regular activity they a person perform, like running a house is a full-time occupation. Similarly, a habit and occupation that a person have regularly. So now basically nursing is a kind of vocation that will be further explained later. So what the literature define? According to the Webster Dictionary, occupation is defined as what occupy or engage kind of regular activities or hobby and employment that a person have. Whereas profession is defined as a vocation, a specialized skills or desire and a purpose in life require advanced training and usually involving mental rather than manual work, such as teaching, engineering, especially medicine, law, and nursing. So that profession required that specialized training which mold their behavior and differentiated from vocation because vocation have most oftenly contain certain manual work rather than the mental work. I think the concept is very much similar, or most of the people might have understood. कुछ ज्यादातर स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। अब हम डिफाइन करेंगे अगले स्लाइड में कि व्हाट इज नर्सिंग। अब नर्सिंग क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं।
So the term nurse is basically evolved from the Latin word that is called nutrix, which means to nourish, to cherish, or to care for. Today, nursing emerged as a learned profession, as we have discussed in the previous slide, that is both a science and art. How it is a science and what is meant by a science and what is meant by an art will be explained further. Now, nursing is indeed an art and science. How? Because the science develop that discipline knowledge that specialize it from other discipline. Like what we have discussed that the profession have a specialized knowledge. जिस तरह हमने डिस्कस किया कि our profession की अपनी specialized knowledge होती है. So that knowledge, वो जो knowledge होती है वो जो हमारे वर्क को एक्सप्लेन करती है. इट हेल्प टू एक्सप्लेन द वर्क ऑफ अ नर्स. लाइक डिफरेंट नर्सिंग थ्योरीज है जो हमारे बेसिक नर्सिंग प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करती है. सो बेसिकली दैट पार्ट इज कॉल्ड द साइंस, and the art part addresses the human connection, empathetic communication, dedicated cares, and compassion that make a nursing a critical element of the healthcare system. Like mean application of that knowledge into the real world while interacting with the client. That scientific knowledge you apply in the real world by using your communication, your interaction with the clients and the other colleagues. So that is basically the art part. So अब science और art इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि science, because the nursing as a profession, it required a specialized discipline knowledge which will explain their basic practices, whereas the art is the application of that scientific knowledge into the real world. So if someone says that nursing is an art, so we can object that nursing is an art and science. Now, again, I will further elaborate that art is the application of the knowledge and skills to bring about the desired results. And it is an individual action. Like nursing art is carried out by the nurse in a one-to-one relationship with the patient and constitute the nurse conscious responses to specific and patient's immediate situation. Like इधर मतलब ये कि अब जो आपने स्किल सीखी जो साइंटिफिकली रेशनल के साथ जो हमें डिफरेंट थ्योरी ने डिफरेंट लेवल ऑफ प्रैक्टिस और डिफरेंट गाइडलाइन ने हमें एक बेसिक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एक्सप्लेन किया. अगर जब हमने ये सीखे और उसको हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई करें while interacting using our skills, our therapeutic communication, verbal gestures, local culture respect, and these contextual involvement of the individual to give care and application of that scientific knowledge into the real world is basically the art part. Whereas the science, as we have said, it is a body of knowledge that help us in developing that discipline knowledge. It is defined as basically both a unified body of knowledge, skills, and the methodology. Methodology means the researches or the area of the researches that is necessary to provide such knowledge. Like mean in nursing profession there are different fields, like someone profession are in the teaching faculty, some are researchers, some are advocacy, some are in the clinical practice. So basically all these professionals are working to to make it a profession, because some professionals are producing the knowledge, they are doing conducting the research, as collecting data, investigate the problem. They provide us the basic guideline, and then the practice nurse provide that scientific knowledge into the real world, like apply by using their style of communication, their interaction with the clients, and they know how to practically
implement that knowledge. So basically, both art and science are part of the nursing. Now, when we call it that we are a professional, so the question is how? What are the salient features that we call ourselves as a profession? So the salient feature of the nursing profession is basically you must have a specialized body of knowledge. As I have mentioned, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि प्रोफेशन का डिफिनीशन क्या है कि इसमें आपका अपना एक डिसिप्लिन नॉलेज हो, आपका अपना एक स्पेशलाइज स्किल्स हो, और तो वो जो स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट इज part of your profession differentiation that differ you from other profession. Like the medicine people have their own specialized knowledge, the legal fraternity have their own specialized knowledge that is different from the teaching cadres. So the nursing has developed into an identifiable separate discipline. Yes, a specialized body of knowledge called nursing as science. Yes, we have explained. Now it was compiled through the research effort of nurses with advanced educational degrees. Like as I mentioned that many of the nurses are working in different areas. Some are researchers with advanced skills or PhDs or MSNs. So they conduct the research. They provide us the basic knowledge, and these then knowledge we uh, are then given the guidelines, and then at simple clinical practice area by our um, BS level nurses, they implement those already produced knowledge into their real practice. So that body of knowledge is essential for any professional. Although this body of specialized knowledge is relatively small in in example of nursing, but it form a theoretical basis for the practice of nursing today. As I have mentioned that they provide us a theoretical nurses, and the channel name is also theoretical nurses. So theoretical nurses, we will explain the different works of the different theorists to be to explain that how they work and how they have explained us the different concept, um, especially in the uh, in the implementation of care and giving care in different aspects of the dealing with the clients and different problems. So अगर हम एक अपने आप को प्रोफेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा अपना एक डिसिप्लिन नॉलेज है, और ये नॉलेज डिफरेंट है फ्रॉम अदर प्रोफेशंस. तो हमारा एक नर्सिंग डिसिप्लिन नॉलेज है, ये हमारा एक फीचर है जो हमें डिफर करती है कि वी आर प्रोफेशनल. सेकंड क्या क्वालिटी है जिससे हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम डिफर करते हैं और हम प्रोफेशनल है? That is individual responsibility and accountability. Responsibility is our job description that we are responsible for certain action, and up to that we are not responsible. So we have certain job description, and accountable legally and ethically we are accountable to that. We are answerable to that actions. So as a nursing profession, we are also having certain basic competency level, and at that um, jurisdiction we are responsible and we can be sued if we are crossing that limit. So there is a kind of limits that is um, that is already explained and explicit to us. So nurses must be accountable and demonstrate a high level of individual responsibilities. ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पेशेंट की केयर करें तो हमें अपने लिमिट्स का पता हो, एंड सर्विसेज व्हाट जो हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट की. अब अकाउंटेबिलिटी का जो कंसेप्ट है बेसिकली ये लीगल एस्पेक्ट पे है, एथिकल एस्पेक्ट्स पे है, एंड इसके कुछ प्रोफेशनल इम्प्लीकेशन पे है. सपोज हमारा काम नहीं है कि हम सर्जरी करें पेशेंट की, लेकिन अगर हम इस एक पेशेंट की सर्जरी में इन्वॉल्व हो, सपोज हमें अपेंडिक्टोमी में इन्वॉल्व हो, हम ऐसे प्रोसीजर करें जो हमें ऑफिशियली अलाउ नहीं हो ना हो, तो इन दैट केस anyone can sue us. So that is our limit that we are crossing, and that accountability protect us legally from
from legal complications. So basically, every profession have their own individual responsibilities and accountabilities. Like the medicine doctor, the MBBS doctor have their own level of competencies and their accountability. They are accountable for certain action up to that level, where the consultant have their more responsibilities and certain type of job description. Similarly, um, in the other profession as well. So another qualities जिसे हम कह सकते हैं कि सीलेंट फीचर है हम नर्सिंग प्रोफेशन की, हमारे अपनी इंडिविजुअल कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड में हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जिसको हम ईबीपी कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द करंटली यूज नर्सिंग थ्योरिस्ट एड्रेस दिस इशू इन सम वे, लाइक जिस तरह मैंने बस एक्सप्लेन किया कि हर एक प्रोफेशन की अपनी एक डिसिप्लिन नॉलेज होती है। अब उसी डिसिप्लिन नॉलेज को जो अपडेटेड हो, लेटेस्ट हो, उसको हम यूज करके इस्तेमाल करके अपने केयर में उस प्रैक्टिस में यूज करें, तो इसी को हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। लाइक एज आई हैव टोल्ड दैट that discipline knowledge guide our practice. So when we use that scientific knowledge into our practice, that is called evidence-based practice. The evidence-based practice is the practice of nursing in which the intervention are based on data obtained from research that demonstrate that the finding are appropriate and successful. Like suppose मैं आपको example दूं, like इस तरह nasogastric tube checking है, तो different techniques यूज होते हैं। जिस तरह आजकल लेटेस्ट टेक्निक है कि हम इसको जब हम कंफर्म करते हैं कि यार नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब स्टमक में है, तो उसको हम एक एक लेटेस्ट टेक्निक है कि इसको हम गैस्ट्रिक लवाज जब करते हैं तो गैस्ट्रिक कंटेंट को स्प्रेड करते हैं, इसको हम पीएच पेपर से चेक कर सकते हैं। तो ये हम एक्सप्लेन करती है कि आप पीएच की जितना एक्सपेक्टेड हमारा स्टमक की जितना एक्सपेक्टेड पीएच लेवल है, तो वो हमें इंडिकेट कर दी कि हमारा एंजिट्यूब स्टमक में है या आउट ऑफ द स्टमक। तो दीज आर द लेटेस्ट गाइडलाइन व्हिच एक्सप्लेन अस दैट वी must have the basic scientific reason behind implementing any of the intervention. It basically involves a systemic process of uncovering and evaluating and using information from research is the basis of making decision about providing care of the clients. नंबर 4 पे हमारे कोड ऑफ एथिक्स basically is a kind of ethical principles that outline the mission and value of a business or organization or an institution. एंड इस तरह हमारे प्रोफेशन की भी कुछ लीगल एथिकल कोड ऑफ एथिक्स है जो हमें अलाउ करती है किसी खास लिमिट पे, ताकि हम एक सेम लेवल पे एक प्रैक्टिस करें प्रोफेशनली। लाइक हाउ प्रोफेशनल आर सपोज टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, the ethical principle based on the organization core values, like the standard to which the profession is held. Like some of the ethical principle like autonomy, everyone has the autonomy to practice in their own jurisdiction. Like the medicine, as I have explained, every profession have their own level of autonomy and responsibility. They have their job description, so they must implement their own job description autonomously. And justice, merit should be prevail. Every decision, every action must be fair for everyone, for client, for employee, for organization, and for all. Beneficial, like it's a principle that tell us that to do good to the patient, like आप जो भी आप एक्शन करें आपका पर्पस हो टू हैव गुड, to do good. And the principle of non-maleficent mean like do not harm your patient. Your main aim must be that whenever you are doing performing certain interventions, your aim must be to not harm the patient. So basically these are a set of the ethical principle that limit us up to that certain frame to
to respect the client certain, like the client privacy, the client dignity, the client respect, cultures, values that guide us how to protect ourselves from legal action when you are crossing that boundary. Suppose if we breach the confidentiality of patient, we have certain secrets that we have received while interviewing the patient at the first encounter. So at that context, basically वी आर ब्रीचिंग द प्राइवेसी ऑफ दैट क्लाइंट। हम उस पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको हम ब्रीच करते हैं, तो उस पेशेंट को पूरा हक है कि वो आपको सू करे। तो कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली फ्रेमवर्क है जो हमें गाइड करती है, ताकि हम उस फ्रेमवर्क में उस कम्युनिटी, उस क्लाइंट की जितने भी सोशल कल्चर वैल्यूज है उसको हम रिस्पेक्ट करके उनको केयर दें। लाइक इवन अ डेड बॉडी हैव देयर ओन level of respect. We have to follow that. So the code of ethics is the basics of our practice that explain us how to practice ethically. Another feature हमें differentiate करती है as a professional, like competency and professional licenses। हमारा एक certain level of competency होनी चाहिए जो कि पेशेंट की केयर के लिए रिक्वायर्ड होती है। लाइक we must have a licensure exam. That licensure exam have certain expectation, certain level of knowledge and understanding required that everyone must have to be at the same level. Like डिग्री नर्स है तो उसकी कुछ certain job description, एक level of competence है, तो उसी हिसाब से उन डिग्री नर्सिस को असेस किया जाता है और उनको लाइसेंस इशू किया जाता है। लेकिन अगर मास्टर लेवल पे एक नर्सिस को असेस करे या लाइसेंस इशू करे तो मास्टर लेवल पे उस प्रोफेशनल से उसी लेवल पे जो कॉम्पिटेंसी वो एक्सपेक्ट किया जाता है। The master level of nurses must have a background knowledge of research, and they, they are expected that they can perform a nursing research. They can conduct researches, whereas the PhD nurse is required to develop some certain guideline and must be more proficient in conducting the research. So these are the level of competencies, whereas the degree nurses must have an introductory background of research knowledge. So these are basically the level of competencies, and the professional licenses is basically the country requirement, the the council requirement or the state requirement, legal requirement that every nurse must be liable and they must have a professional license before getting into the profession and into the practice. So that all license and level of competency also differentiated from other profession. Only after passing the examination, the nurses are allowed to practice. इधर में क्योंकि हमारे कंट्री में डिस्कशन है नर्सिंग लाइसेंस की एग्जाम के बारे में, तो इधर हम यूएस की एग्जाम्पल लेते हैं कि इन यूएस द ग्रांटिंग ऑफ नर्सिंग लाइसेंस इज बेसिकली अ लीगल रिक्वायरमेंट। हर एक स्टेट पे जब आप जाते हो तो उसी स्टेट के हिसाब से अपने लाइसेंस श्योर एग्जाम देना होता है, और वो लाइसेंस श्योर एग्जाम अपने पास करके तो तब आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं। अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस in the hospital. So basically that licensure protect us legally. And point number 6 पे autonomy and independence of practice. As a nurse, as a nursing professional, in reality basically we work on both an independent and interdependent discipline. Like as a nursing professional हमारा, चूंकि हम एक हॉस्पिटल में एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, तो बेसिकली कुछ हमारे जो टास्क है, स्किल्स है, वो हम इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ जो ऑर्डर है वो कुछ जो इंटरवेंशन है, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड सर्टन गाइडेंस और ऑर्डर फ्रॉम फिजिशियन एंड कंसल्टेंट एंड अदर डिसिप्लिन। लाइक सपोज एक पेशेंट को ड्रेसिंग करनी है तो दैट डिसीजन वी कैन टेक। आईवी किनोला पास करना है तो
या एनजी ट्यूब, एनजी फीडिंग वगैरह, तो ये डिसीजन हम इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, तो इसी को इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी कहते हैं। इन वेयर एज इन केस ऑफ, जिस तरह कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें फिजिशियन ऑर्डर रिक्वायर्ड होती है, सपोज लाइक हम एक मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं, तो फॉर दैट वी मस्ट हैव अ डॉक्टर ऑर्डर बिफोर administering a medicine. So that is basically the practice of interdependent practice for which we are involving other discipline professional like the doctors. Uh, they guide us and they write us the order to uh, give the medicine into that time and that orders. So basically, nurses in all healthcare settings must work with physician, hospital administrator, pharmacist, and other groups in the provision of care. So in that context, we work in interdependent discipline. In some cases, nurses in advanced practice role, nurses practitioner can do establish their independent practice, like um, स्पेशलाइज केयर में सपोज गायनी की गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइज कुछ मिडवाइफ होती है जिसको कुछ सर्टन लिमिटेशन होती है कुछ प्रैक्टिसेस की, लाइक conducting of deliveries, taking certain decision of prescribing certain level of medicine to the client at the community level. So these are basically the independent practices that are allowed to that specialized midwife. So that is basically the concept, like we must have autonomy and independence of practice at our own jurisdiction. So now definition of nursing, basically ये सारे जो कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन कर दिए हमें बेसिकली हमें ये बता दी है, हमें ये एक्सप्लेन कर दी है कि बेसिकली नर्सिंग है क्या। तो नर्सिंग इज बेसिकली यूनिक फंक्शन, जिस तरह वर्जीना हेंडरसन ने 1977 में एक्सप्लेन किया कि the unique function of the nurses is caring for individual, individual जो either sick or well, to assess their responses, how they respond in that condition, and assess them and the performance of those activities contributing to health recoveries, dignified death that they would perform unaided if they had the necessary strength, well, knowledge, and to do this in such a way as to help them gain full or partial independence. So at explain, वर्जीना हेंडरसन ने बेसिकली होलिस्टिकली नर्सेस को डिफाइन किया है। बेसिकली नर्सिंग का कंसेप्ट क्या है, गिविंग केयर टू इंडिविजुअल और टू दैट इज सिक और वेल हेल्दी। केयर के दौरान उस पेशेंट की जितनी भी रिस्पॉन्स है, साइन सिम्टम है, प्रोग्रेस है, उसको असेस करना और फिर उनकी उसकी रिस्पॉन्सेस को देख के उनकी पेशेंट की क्लाइंट की रिकवरी में उनको हेल्प करना। हाउ एवर इन केस ऑफ डेथ उनको एक डिग्निफाइड डेथ देना। सो in this definition basically it have explained holistically almost every aspect of the nursing profession, that how a nurse should nursing how nursing can be defined. Whereas Florence Nightingale defined nursing over 100 years ago as the act of utilizing the environment of the patient to assist him in their recovery. Now, इसमें पर्पस दोनों का सेम है। वर्जिना हेंडरसन एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पर्पस सेम है, लेकिन डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है, उन्होंने यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट का कंसेप्ट दिया, वेयर एज वर्जिना एंडरसन ने केयर का कंसेप्ट दिया। तो बेसिकली ये हमारे लेजेंड थ्योरिस्ट है जो हमें गाइड करती है कि बेसिकली नर्सिंग प्रोफेशन है क्या।
So this is our discipline knowledge that guide us. If we define the nursing, so these professionals, these legend theorists have guided us what we call it nursing. So that was the point of view of Virginia Henderson, and now the Florence Nightingale says that the act of utilizing the environment of the patient to assist him in the recovery. आप पेशेंट की जो एनवायरनमेंट है उसकी बेड साइड पे उसका एनवायरनमेंट एयर वेंटिलेशन वो एस्पेक्ट को देख के वो क्लीनलीनेस मेंटेन करके एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करके पेशेंट की रिकवरी को प्रमोट करना एज बेसिकली नर्सिंग कहलाई जाती है डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग को अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो बेसिकली अ पर्सन ट्रेन as we have discussed that we the profession have must be a trained person. It is a vocation that must have a training periods. So a person must be trained, licensed, or skilled in nursing, and nursing is called nurse. Whereas again, Florence Nightingale described her in her notes on nursing the nurse's role is basically one that would put the patient in the best condition for nature to act upon आप patient की environment को surrounding को clean करे और let the environment act upon it to help them in recovery. So finally अगर हम nursing को last में define करें तो basically nursing as a professional nurse is a person who has completed a basic nursing education program and is licensed in his country to practice professional nursing. Now, the concept of care and nursing. Now, इससे पहले कि हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें फर्दर तो यहाँ पे वर्जिना एंडरसन ने केयर का कंसेप्ट दिया तो केयर एक क्वेश्चन में आता है जहन में कि केयर होता क्या है तो केयर बेसिकली द प्रोविजन ऑफ व्हाट is necessary for the health, welfare, maintenance and protection of someone or something. जो जितना हम एक क्लाइंट को रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं सर्विसेज दे सकते हैं टू टू हेल्प देम इन रिकवरी to help them in rehabilitation to get them to normal condition is basically called care like the care of the elderly people. The elderly people require assistance. So when you are assessing that patient and their ambulation, their eating, and their other activities, so basically you are caring for them. So nursing is caring. Caring means the services that involve close personal contact with the recipient of care. The recipient of care, basically the client or the patient in which you are providing the services, and the recipient as the client who receive your services or the recipient of the care. So client is the patient who receive the care, and we are nurses because we providing them the care, the services to help them and recovery. So nursing is concerned with services that take human into account as physiological, psychological, and sociological uh, aspect like as Virginia Anderson have explain the holistic care concept of uh, physiological, psychological, and sociological aspect of care. So, and the last, nursing is committed to promoting individual, family, community, and national health goals in its best manner possible. Like it is not only confined to an individual, but uh, it also uh, giving nursing also nurses also giving services to the families, communities, and uh, the national health, helping in achieving the national health goals. Now, what is the level of care? The level of care basically in medicine, the level of care refer as to the complexity of
the medical cases the doctor treat and the skills and specialty it required. Like लेवल ऑफ केयर को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वन लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे से तीसरे जब हम जाएंगे तो उनको हम लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी पे डिफरेंशिएट करते हैं, आर द स्किल्स दैट रिक्वायर्ड इन द वन एरिया दैट इज नॉट एग्जिस्टेड इन द अदर एरिया। सो बेसिकली ये फीचर होती है जिसको हम लेवल ऑफ केयर को चार ग्रुप, चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी केयर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनी केयर। नाउ प्राइमरी केयर is basically when a person injured or anyone might seek primary care for the following. Like suppose a person get illness, so see he may see the primary care doctors when he notice a new sign symptom like cold, flu। तो जब जब किसी को फर्स्ट टाइम कोई साइन सिम्टम हो और वो किसी डॉक्टर के पास, जीपी के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाए किसी बीएचयू में कम्युनिटी लेवल पे, तो बेसिकली उसी को हम प्राइमरी केयर कहते हैं। प्राइमरी केयर बेसिकली कम्युनिटी लेवल पे होता है, टीएचक्यू डीएचक्यू लेवल, बीएचयू लेवल पे होता है, जिसमें एक जनरल प्रैक्टिशनर मोस्टली एमबीबीएस लेवल पे इन्वॉल्व होता है और वो पेशेंट क्लाइंट को केयर करता है। इनिशियल बेसिक फर्स्ट एड और इनिशियल जो फर्स्ट साइन सिम्टम ऑफ द डिजीज है उनको ट्रीट करने में उनको हेल्प करती है। Primary care is basically responsible for coordinating the care among the specialties and the other level of care। अगर सिंपल केस है तो उसको कम्युनिटी लेवल पे ट्रीट किया जाता है, वेयर एज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन देयर इज द केस इज मोर कॉम्प्लेक्स, सो इट इज रेफर फ्रॉम द प्राइमरी लेवल टू द सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी लेवल का बेसिक जो बेनिफिट है, द स्टडी हैव शोन द प्राइमरी केयर benefit like enhancing access to the healthcare services। जितना हम अर्ली विजिट करें प्राइमरी केयर सेटअप में तो हमारी डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम में जो अर्ली डायग्नोज हो सकती है। इट आल्सो बेनिफिट like providing better health outcomes and decreasing the hospitalization as use of emergency department visit। like जितना भी हम क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो उस हिसाब से हमारा जो टर्शरी केयर सेटअप है उस पे बर्डन कम होगी। सेकेंडरी केयर मीन लाइक when your doctor has transferred your care to someone who has more specialized specific expertise। like suppose एक पेशेंट है, एक जिस तरह मैंने मेंशन किया कि प्राइमरी केयर एंड सेकेंडरी केयर, तो दोनों में डिफरेंस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केयर एंड स्किल्स है। सो प्राइमरी सेटअप पे एक जनरल प्रैक्टिशनर काम करता है, लेकिन सेकेंडरी केयर पे हमारे पास कंसल्टेंट एंड स्पेशलिस्ट काम करता है। तो जो केयर सेकेंडरी सेटअप पे एग्जिस्ट करती है वो प्राइमरी सेटअप पे नहीं होती, तो वो मोस्ट ऑफ द प्राइमरी पेशेंट आज रेफर टू दैट secondary care to get a specialized, like suppose a cardiologist focus on the heart and the blood vessels, endocrinologist focus on hormone like diabetic mellitus and the thyroid disease। So these are the specialized care basically that is not available at the primary care level। Is the tertiary care is a care that require a high level of specialty care। it require a highly specialized equipment and expertise, and at this level most of the procedure like coronary bypass surgeries, that is basically sometime not available in the secondary care services, dialysis and plastic surgeries, similarly neurosurgeries, there are super specialties that is not available at the secondary care setting, so most of these cases are
refer to the tertiary care setting, where these specialists are available. These specialties require a specialized uh, professional and the special equipments which is not available in the secondary care. Whereas the concept of quaternary care is basically that is the extension of the tertiary care, that is highly specialized care that is not available at the tertiary care. It is even more specialized and highly unusual. Like suppose there is new medicine and there is experimental medicine and procedure going on, so the client is in a terminal stage or in a disease where the treatment is not available, so this client is then uh, sent to that centers for trial base after taking the legal permission from that. Are there certain uncommon and specialized surgeries that is commonly not available in the tertiary care setting. So quaternary care is basically extension of the tertiary care that is highly specialized and unusual condition. So yeah, different level of केयर को डिस्कस करने का मेन पर्पज ये था कि ताकि एज अ नर्स हमें ये पता चले कि जो हम प्राइमरी केयर सेटिंग की बात करते हैं, सेकेंडरी टर्शरी, तो हम ये समझ सके कि बेसिकली उस लेवल ऑफ केयर सेटिंग पे कौन कौन से एक्सपर्ट अवेलेबल होती है और किस लेवल की हमें नॉलेज या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ताकि हम कम्युनिटी को या क्लाइंट को प्रोवाइड कर सके या रेफरल में क्लाइंट की हेल्प कर सके। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर एक प्रोफेशनल को पता होना चाहिए कि हमारे लेवल ऑफ केयर क्या है। जिस तरह फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करें तो जिस तरह हॉस्पाइस केयर एक कंसेप्ट है, बेसिकली ये उस फेज में क्लाइंट को दी जाती है जिस तरह लास्ट स्टेज में कैंसर की पेशेंट है जो लास्ट स्टेज में हो, तो उस क्लाइंट को घर में रखा जाता है और उसको कंफर्ट के लिए कुछ पेन मेडिकेशन या कुछ साइन सिम्टम के रिलीफ के लिए या क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कुछ इंटरवेंशन किया जाता है। लेकिन उनकी जो लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज है वो दैट फेज इज ऑलमोस्ट इनक्योरेबल, सो इट्स काइंड ऑफ कंफर्ट केयर। सो हॉस्पाइस केयर फैसिलिटीज है जिसमें हम स्पेशली उस पेशेंट को रेफर करते हैं जिसकी डिजीज एट द लास्ट स्टेज पे हो। पैलिएटिव केयर का कंसेप्ट इज आल्सो basically another concept or a type of care that is also called a supportive care, uh, a symptom management or a comfort care at any age, at any stage. So पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पाइस केयर में डिफरेंस ये है कि आप पैलिएटिव केयर आप डिजीज की किसी भी स्टेज में दे सकते हो, लेकिन हॉस्पाइस केयर आप ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे आप एक क्लाइंट को जब आप केयर दे रहे हो तो, और वो भी अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ आप विजिट करते हो उनकी उनकी जो रिहायश है या उनकी जो फैसिलिटी है या होम केयर सर्विसेज है जो भी है, तो उसी को हम हॉस्पाइस कहते हैं। और पैलिएटिव केयर तो हम हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं, आप एट होम भी दे सकते हो, तो ये डिफरेंट है जो आपको समझने की जरूरत है। Whereas another concept is respite care. Respite care is basically a temporary institutional care, like it is basically a short-term break for caregivers. Like there are certain care होती है जिसको हम specialized institutional care, like there is specialized cardiac surgery, तो वो जो लॉन्ग टर्म कोई केयर रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह स्ट्रोक के पेशेंट की रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ दिन आप उसको एक स्ट्रोक फैसिलिटी में रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली रिस्पाइट केयर, एंड देन आफ्टर दैट यू शिफ्ट दैट पेशेंट टू होम or some other facilities where the client then receive a long-term care. But that temporary breakup when the person need a care from a profession, so that person is admitted into certain facilities for a certain time, a week or 5 to 10 days. So that is called basically a respite care. Now हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली दोनों केयर का मतलब क्या है? द एम इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ
relief from symptom, or side effects from people with a serious illnesses, or both have special care teams that address a personal physical, emotional, mental, social, and spiritual aspect or needs of the client. तो palliative केयर एंड हॉस्पाइस केयर में ना के पेशेंट की फिजिकल केयर पे ज्यादा फोकस करती है, लेकिन साथ साथ इमोशनल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट पे भी नीड को भी मीट किया जाता है। लाइक इन केस ऑफ कैंसर इन द लास्ट स्टेज, ऐसे पेशेंट में पेन ज्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट में पेन साथ साथ इम्पेंडिंग डेथ की जो जो, जो उनको मेंटल स्ट्रेस होती है, साथ साथ उनकी जो केयर गिविंग का जो कंसेप्ट है उनको मोटिवेट किया जाता है, ताकि उनकी कोई फैमिली मेंबर उनकी केयर में इन्वॉल्व हो। स्पिरिचुअल नीड उनको डिफरेंट, उनकी मजहबी अकायद है उस हिसाब से उनको कुछ रिलीफ मिले, तो उसी एस्पेक्ट को उनको मद्देनजर रखा जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट आपकी ये दोनों पैलिएटिव और हॉस्पाइस केयर में कवर की जाती है, जिसको हम होलिस्टिक केयर बेसिकली भी कह सकते हैं। Thank you so much, students. Today was a first session, and inshallah, as soon as we progress, so we are going from simple to complex ideas, like from concrete to more abstract ideas. Thank you. Thank you very much.